Assalamu alaikum, Ashir. जी, अस्सलाम वालेकुम काजी साहब. Alaikum salam. A very warm welcome from warm Dubai to a cold Canada. Basically, मैं जो हूँ, I've been in search of, or I was in search for Ashir Azeem for quite some time. Or because of various reasons, I mean, I'd seen his movie, I'd seen his drama, and plus I had been following up उनके जो YouTube programs थे. And I was intrigued about the journey of this very interesting gentleman who had achieved so much, but yet, I mean, he had to, for whatever reasons, leave the country. फिर हमारे एक म्यूचुअल दोस्त हमें मिल गए, आमिर दुरानी साहब, और उनके तवज्जुह से जो है हमारी जो है आशिर अजीम साहब से फाइनली मुलाकात हो गई. आशिर की स्टोरी जो द रीजन इट हैड इंट्रिग्ड मी वाज ये कि अपने मुल्क से मेरे ख्याल में हर किसी को मोहब्बत होती है. ये बात कहना कि सिर्फ पाकिस्तानियों को मोहब्बत है या किसी और को मोहब्बत है, दैट इज नॉट ट्रू. हर किसी को अपने मुल्क से मोहब्बत होती है. उसके मुल्क में, अपने मुल्क में वो पलता बढ़ता है, बड़ा होता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है. बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं कभी कभी कि उसको खोद के उसके थ्रू निकल जाता है, या कभी कभी उसको पार कर लेता है. मगर कभी ऐसे वक्त आते हैं कि जब इंसान जो है ना कहता है कि ये वाली जो चट्टान आई है, पहाड़ आया है, मेरे ख्याल में इसमें बेहतर ये है कि जो है ना कि इसको उसकी जगह पे छोड़ दो और फिर अपनी उसी मोहब्बत वतन से, उस मिट्टी से जिससे उसने मोहब्बत की होती है, एक दिन वो कहता है यार कि अब मेरे ख्याल में मैं अपनी एक कोशिशें और काविशें जो है किसी और तरफ लगाऊं. जो मुझे समझ में आई है, आई मीन नो, आशिर अजीम डजंट हैव टू कंप्लीटली एग्री विद मी, मगर मुझे आशिर अजीम की कहानी ऐसी ही नजर आई है. An individual who had strived, who had actually put his personal life in a lot of danger at various places, and he had excelled. I mean, he gave to the country, and the country in return also obliged and gave a lot to him. But at a certain point of time, you know, there were hurdles which were very difficult. So Ashir, if you know this is something, you know, you agree or disagree, I pass on the floor to you. We are going to run this 4-part program. This is a story about a Pakistani gentleman, you know, who has strived, who has worked hard, and then at a certain point of time he said, you know what, kuch shahar bhi log bhi zalim san te koi sanu bhi maranda shauq bhi si. The floor is yours, Ashir. So Kazi Sahab, it's not as much as I gave up. It's about certain things that you value. Okay? And I don't think I ever gave up on those values. हर शख्स का एक जिंदगी का अपना फलसफा होता है. It's the way how you put value on things. You know, value is something that you put into something. There's no inherent value. अच्छा, अब मेरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू है, से फॉर एग्जांपल रिच पे जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो वेल्थ नहीं है. ठीक है जी. सिमिलरली जो ह्यूमन होने पे मेरा कॉन्सेप्ट है वो लैक ऑफ फियर है. आई एम अ ह्यूमन if I don't have fear, because I believe that the greatest disease on the planet is fear, and a person is only a human if he is fearless. You will not get anywhere in life unless you're fearless. It is really interesting. I think the world runs on fear right now, right? The world has always run on fear, unfortunately. And more so in certain parts of the world have always run on fear. Say for example, जैसे मैं एक अपने YouTube में भी बात कर रहा था जी, as a small child हम बच्चे को बाप से डराते हैं. बाप उसका दोस्त नहीं होता, उसको खौफ होता है अब्बा आ जाएगा. स्कूल में उसको मास्टर से खौफ होता है. सो जब आप खौफ में डाल देते हैं ना लोगों को, मैं क्यों कहता हूँ कि द वर्स्ट थिंग ऑन द प्लैनेट इज फियर. जब आप लोगों को खौफ में डाल देते हैं तो लोग प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं. फिर वो ये नहीं सोच रहे होते कि जो ये शख्स कह रहा है वो मेरिट पे ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा. वो ये सोच रहे होते हैं कि ये कौन कह रहा है, ठीक, और उससे खौफ की बुनियाद पे उससे एग्री या डिसएग्री कर रहे होते हैं. ये you'll see all around you, you know, people sitting in meetings looking at the face of the boss कि बॉस क्या सुनना चाह रहा है जी, तो हम वो कह दें, because it's not what they really think. Now after a very long time करते 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 आपकी वो इतनी second nature बन गई होती है कि आपको खुद भी समझ आना बंद हो गई होती है कि मैं सोच जेन्युइनली क्या सोच रहा हूँ. सही.
so it's very interesting. When I went to civil services, so there was this teacher who was training us, an officer, senior officer. So he said कि आप लोग क्या खेलते हैं? मैं उस वक्त स्क्वॉश खेलता था, यंग हूँ। तो मैंने कहा जी मैं स्क्वॉश खेलता हूँ। नहीं ये तो बुरी बात है, आप ऐसे करें, आप गोल्फ खेलना शुरू करें। मैं कहा जी मैं क्यों गोल्फ खेलना शुरू करूँ? देखिए सारे बड़े ऑफिसर्स जो हैं, सीनियर्स जो हैं, वो गोल्फ खेलते हैं। गोल्फ आपको जिंदगी में वो एडवांटेज देगी कि आप फिर इस किस्म के लोगों में उठेंगे, बैठेंगे, उनसे आपकी रिलेशनशिप्स डेवलप होंगे। यार अगर मैंने जिंदगी में खेल इसलिए खेलना है कि कोई दूसरा स्टूपिड क्या खेलता है, so am I living or is somebody else living? And this is what happens to all of us. You know, we don't even know. So when I say fear, पे हमारी जिंदगियां गुजरती हैं और आप जिंदा हो ही नहीं सकते unless you're absolutely fearless, right? तो this is what I mean, right? और आप रिलीजन में चले जाएं, आप किसी चीज में चले जाएं, आप कोई चीज को कोई सड़क पे गिरा हुआ है और आप उसे उठाते हैं, तो आप किस लिए उठा रहे हैं? किसी जजा और सजा के कॉन्सेप्ट पे उठा रहे हैं? Then I think you're a very selfish person, right? आपको तो इसलिए उठाना चाहिए कि it's the right damn thing to do. अगर ये चीज यहाँ पर यूं है और मैं समझता हूं कि ये गलत है, तो भले इसमें मुझे फायदा हो, भले इसमें मुझे नुकसान हो, ये मैं करूंगा। That's right. इस पे मुझे आप दोज़ख में भी डाल देंगे, मैं फिर भी यही करूंगा, right? So everything actually is based on fear, whether it's this worldly or that worldly. And when you create such people, and you know, I think fear जो है ना, ये trait of the slaves है। जो लोग जो free men होता है ना, उसमें fear वो इसलिए चीजें कर रहा होता है because they take it as their responsibility. मालिक का भी जो concept है ना, if I'm the owner of this house, मैं इस मुल्क का मालिक हूँ, तो मुझे टैक्सेस देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरा घर है ना जी, उसका बिल मैं नहीं देना है, उसकी दीवारों पे अगर पेंट नहीं हुआ तो मैं पैसे दूंगा ना, और तो नहीं किसी ने देने। सही है। अगर मैं इसका मालिक हूं तो मैंने किसी से इजाजत नहीं लेनी कि जी आर्मी चीफ मुझे बताएगा या पता नहीं इमरान खान मुझे बताएगा या प्राइम मिनिस्टर मुझे बताएगा। मुझे पता ही क्या गलत हो रहा है और मैं जाऊंगा और इसको ठीक कर दूं। तो ownership जो है ना जी, that is free men. So what I'm trying to say is that in my black and white world, kind of taking it without to understand it clearly, in my black and white world there are free men or there are slaves. Okay, good. तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, देखिए, I'm not going to live in the slaves. That's it. I'm not a slave. I'm not going to be companion to slaves, right? And I'm a very fair person. I will genuinely tell you in a meeting or in any environment what I really think, right? I'm not trying to be difficult. If you're right, I'll be, you can be my worst enemy and I'll say, yes, you're absolutely right. And I salute you for it. But if you're wrong, I don't care who you are. I'm going to tell you what I think, right? Now, my kind of people may not be very successful in life from how you put value on success. That's not how I put value on success. And I will live my life by the way I put value on it. चले ठीक है, ये तो हमने जो है ना, खैर में आखिरी मोनोलॉग के आखिरी सेंटेंस है, so it was not fear, it was basically principle that we have established. But you know, हमारे पहले पार्ट के अंदर what I want to know कि आशिर अजीम की कहानी कहाँ से शुरू होती है? और वो fearlessness से शुरू होती है. Okay. And that's why I put it here, right? It's up to you to pick this portion up and go and put it at the back at editing, because you know you are the director there. And Ashir Azeem की कहानी जो when I look back in life, और वो connecting the dots वाली जो speech है, वो मुझे आखिर में जब इस stage पे आके जब मैं अब पीछे देखता हूँ, तो मुझे यही समझ आता है कि जिंदगी ने मुझे actually, जो मैंने कहा ना, I'm a very spoiled person in life. जिंदगी ने मुझे spoil किया है into fearlessness, right? So और मैं आज अचानक तो यहाँ नहीं पहुंचा ना. It's a personality which was formed over years, so that's where it started. So I think, so I was born in a place called Quetta. It's a hospital called Lady Different,
and then I was मुझे पता चला कि जी मुझे निमोनिया हो चुका था जैसे ही मैं पैदा हुआ था, सर्दियां बहुत थी क्वेटा में. So I was in an incubator for about 15 days, I'm told, struggling for every breath that I took. And but I survived. Here I am. And then I was. My father used to work in a place called WPIDC उस वक्त. WPIDC शाहरग में होती थी, which was a coal mining town. So I went to Sharag. So my earliest memories are of that place called Sharag. Sharag was, I think, a very, very independent place. Sharag was a project at that point in time. I'm talking about early 60s, is a project which was run by the Germans. Okay. And so there was an executive, कुछ घर बने हुए थे. एक hill पे, it's a mountain. एक hill पे कुछ executive से घर बने हुए थे जिसमें predominantly Germans रहते थे. फिर एक colony thi, which was for mostly Pakistanis, my father being one of them. My mother at that point was a housewife. और उसमें हम सब बच्चे और पाकिस्तानी रहते होते थे. एक छोटी सी स्ट्रीट थी, कोई क्राइम, कोई फियर, हमें कुछ पता नहीं था. और शाम को खवातीन जो थी वो सड़क पे सारी वॉक कर रही होती थी, हम बच्चे खेल रहे होते थे. And then there was another hill, and there was something called a Kachi colony that I remember from that point in time, where most of the local population from that area used to reside. So my earliest memories in life have been running on mountains, playing on mountains. We did not have internet or whatever at that point in time, so it was a very outdoorish life. It had no concept of religion because I'm a Christian. I was living amongst people. We were the only Christian family, so I probably had no concept of what that was because we didn't go anywhere. And we were not in a joint family system. So there was a mom and there was a dad, and I was the eldest son. So, you know, I didn't know much. It was a very, I think, very liberating life, very outdoorish life. And so that's where it started. Then there was no fear of father at home also while growing up. Was it coming from, from the family or? Okay, so this is what happened. So what happened was that my dad, वो तो सुबह तो ऑफिस गए होते थे, लेकिन जब वो शाम को वापस आते थे तो he was not too dominating at that point in any case, right? Yeah, I was too early to take those influences. उसके बाद ये हुआ कि जी एजुकेशन जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हुआ, I went to class 3, तब शारग में तो कोई एजुकेशन थी नहीं, तो मुझे दादा दादी के पास पिंडी भेज दिया गया कि जी आप चले जाओ और वहां पे आप स्कूल में पढ़ोगे. I can't really remember. I was too young, but I don't think I enjoyed the experience. I don't think any child would enjoy an experience leaving his parents and siblings and going somewhere else. But during that brief period that I was there, there was an explosion in Sharak. And of the 40 people working in those WPIDC coal mines, there was a dynamite ka storage tha PIDC ka that blew up, and of the 40 people, I believe 33 died on the spot. My father was one of the lucky people who survived. Oh, okay. अच्छा, तो वहां से फिर हम क्वेटा शिफ्ट हुए. That's when my mother started teaching in a school. मैं भी पिंडी से फिर वापस आया उस इवेंट पे, एंड फिर हम क्वेटा शिफ्ट हो गए और यहाँ पे स्कूल्स में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया. सो वालिदा साहिबा स्कूल में पढ़ाती थी. वालिद साहब बड़े एक्सटेंसिव पीरियड के लिए उसमें थे, क्या नाम है, हॉस्पिटल में थे. उसके बाद फिर वालिद साहब, चूंकि बच्चे अब हम बड़े हो रहे थे और अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे क्वेटा में, शारग, तो वालिद साहब यूज्ड टू गो टू शारग, व्हिच वाज 90 miles from Quetta. Okay. So now I, being the eldest son from class 3 onwards, dad wasn't really there. Like, dad would come on the weekends because he was in Sharak. So वो जो responsibility थी kind of घर की कि बेटा तुम जाओ ये करो, तो तुम वो करो, वो माँ ने मुझे देनी और मैं ज़ाहिर फिर वो करता था. So a little bit of independence, maybe kind of, freedom from dad, right? So you do whatever. Then my dad went abroad for he went to Iraq. He was working there. He left PIDC. अच्छा, then जब मैंने वो किया 17 O levels किए, फिर FSC की, तो मैं Airforce में चला गया. Okay. अब Airforce जो है ना, वो आपको मेरे ख्याल में स्पॉइल करती है. अच्छा, और जिस दौर में हम Airforce जा रहे हैं, ये जनरल ज़ियाउल हक का माशाल्लाह है, right?
Okay. And you are young, right? You're 17, 18 years of age. Now, deliberately, I don't remember कि वो Air Force की training आपको ये करती है, but it distinctly does it, you know, कि आपको fear kind of नहीं हो रहा होता. मतलब मैं अगर वीकेंड पे हम जब बाहर निकलते हैं तो हमने वो वॉकिंग आउट जो उसका वो भी एक तरह का यूनिफॉर्म होता है जिसमें कैडेट्स बाहर निकलते हैं ना, वो ग्रे बूस्टर ट्राउजर्स, वो हमारा ब्लेजर, वो कटे हुए बाल और वो ऑक्सफोर्ड तो जूते, जेब में हमारे टका नहीं होता, लेकिन आंकड़े जो है ना वो पता नहीं कहाँ से आ रही होती, राइट? वी फील कि वी आर गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड, दे पुट दैट इनटू यू. वी आर वेरी यूनाइटेड, ये हमारा बैच है, ये मेरा सीनियर है, ये मेरा जूनियर है. और इतनी शायद बचपना भी होता है कि जिंदगी इतनी प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट होती है कि जी जो मेरे इमीडिएट सीनियर ने कह दिया बस दिस इज इट, और ये बस मैंने करना है. बाकी ये पुलिस वाला कौन है, ये तो कोई भी नहीं है ना. बाकी ये सिविलियंस, ये फलाने, ये मतलब अथॉरिटी आप अदर देन योर सीनियर की अथॉरिटी आपकी समझ नहीं आती. ठीक है. सिविलियन मुझे पता होता है, पता नहीं कैसे होता है ना, मतलब वो कुछ अजीब से लोग होते हैं ना, मतलब हमें कोई लोग होते हैं, ये नहीं कि जी एयरफोर्स आपको डिलिबरेटली ये कहती है, या आई डोंट नो, हमें तो मैं कभी गया नहीं सिस्टम. हाँ, बट लेकिन इशू ये है ना कि हमें ये पता है कि पुलिस वाला मुझे कुछ नहीं कह सकता, ये जो भी है ये इसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, राइट? और मैं और फिर उस दौर की जो ट्रेनिंग थी, we were told that an officer cannot lie. Now this may appear very idealistic to you, but militaries for years and years and years, they've had this concept of officer and a gentleman, right? So हमारी मैसेज में, हमारे खाना खाने में, वो छुरी कांटे में, वो बैटमैन में, वो पॉलिश जूतों में, वो इस्त्री हुए कपड़ों में, how are we going to behave with ladies? अगर मैं किसी से मिलूंगा तो मैं पहले हाथ आगे नहीं करूंगा, वो एटिकेट्स जो आपको पूरे पढ़ाए जाते हैं, इसलिए मैं हाथ आगे नहीं करूंगा बिकॉज इट्स अ लेडी, she may not like it, so the prerogative lies with her. So all that training that's put into your mind, or was put into our minds at that point in time, kind of created a different kind of a personality. So Air Force actually, I think, spoils you, or did spoil me at least, right? And when I came out of the Air Force, then I went to IBA. That was my first exposure to kind of civilian life. तो छोड़ क्यों दिया आपने एयरफोर्स? अच्छा, अब एयरफोर्स छोड़ने का मतलब वही था कि जी वो मसला ये है कि मैं अपने वेज में शायद इतना फिक्स्ड हूं कि जो मैंने सोचा है, इट हैज टू बी एग्जैक्टली दैट. इफ इट्स नॉट दैट, it's going to go away. I'm not going to go with it, right? I may temporarily flow with it, but I'm not going to go with it. I wanted to go into fighter pilots. I wanted to go to GDP. ठीक है जी. अब हुआ यह है कि एयरफोर्स का जिन दिनों मैं एयरफोर्स में मैंने एंटर किया, तो एयरफोर्स 2 लेवल्स पे इनटेक करती होती थी, मैट्रिक पे और एफएससी पे. ठीक है जी. तो मैं चूंकि ओ लेवल्स किया था, तो इट मेड मोर सेंस फॉर अस कि हम मैट्रिक पे ना जाएं, क्योंकि हमने 1 साल ऑलरेडी मैट्रिक से ज्यादा कर लिया होता था, तो हम तो 1 साल करके एफएससी करते थे. सो जो ओ लेवल्स वाले होते थे, हम हमेशा एफएससी बेसिस पे पीएफ एकेडमी रसालपुर ज्वाइन करते थे. ठीक है. तो हुआ ये कि उस साल में जब अपनी एफएससी की, तो अब मैं बैठा हूँ कि अभी एयरफोर्स की कॉल आएगी, प्लान बी तो कोई था ही नहीं, तो मैं तो एयरफोर्स में जाना है और बस दैट्स इट, पीरियड, राइट? अब वो एयरफोर्स की कॉल ही ना है जीडीपी के लिए. सो एक दिन मैं सिलेक्शन सेंटर चला गया, मैंने कहा जनाब वो तो मैं जीडीपी में जाना है, तो वो किधर है, कॉल नहीं आई. उन्होंने कहा जी हमने तो एफएससी पे इनटेक बंद कर दिया, अब हम सिर्फ मैट्रिक पे इनटेक लेते हैं. जी ये मतलब अचानक नहीं जी, बस ये तो पिछले साल से हो गया, हेडक्वार्टर ने डिसीजन लिया. सो एफएससी बेसिस पे अब जीडीपी नहीं होती, अब सिर्फ मैट्रिक पे होगी. तो मैं कहा जी, अब मैंने कहा प्लान बी था ही नहीं, मैंने कहा मैं मैट्रिक पे चला जाता हूँ, 2 साल जाया हो जाएंगे. जी वो तो मैट्रिक का फिर अभी जब आएगी कॉल तो उसमें आप जाएंगे. अब मसला ये था कि जब मैट्रिक की कॉल आनी थी, क्योंकि वो मैट्रिक के रिजल्ट एग्जाम्स के मुताबिक कॉल आती होती थी, राइट? तो मैंने बाय अ फ्यू मंथ्स मैट्रिक की एज के लिए ओवर एज हो जाना था, एफएससी के लिए तो फाइन था, राइट? Now I was stuck. Hey, I can't go into GDP for no fault of mine because these guys changed the policy, right? अब मैंने तो जाना है क्योंकि मेरा तो यही प्लान है. So I thought कि क्या करूं? So somebody suggested to me कि यार तू ऐसे कर, एक मेरा हमारे जानने वाले थे वो जीडीपी में थे, वो कहा यार आप ऐसे करो,
कि ये हुआ है क्योंकि सडन चेंज ऑफ पॉलिसी है, तो आप ऐसे करो कि आप एफएससी बेसिस पे एरोनॉटिकल पे अप्लाई करो। अच्छा। आपकी वही आईएसएस भी है, वही सीएम भी है, सिर्फ आईज के टेस्ट में फर्क है एसेंशियली, एंड यू एंटर पीएफ अकेडमी रिसाल, राइट? But you'll be going in as engineers rather than GDP. Select up हो चुके होगे, you'll already be there, you'll already be in PF Academy रसालपुर, वहां से तुम चेंज ऑफ ब्रांच के लिए अप्लाई करना। एंड जनरली ये हुआ है काफी सारे ऐसे केसेस, तो तुम्हें चेंज ऑफ ब्रांच करके वो उधर भेज देंगे, वो तुम्हें टेस्ट करेंगे, तो इसका डिफरेंस है, तेरी आइज को कोई प्रॉब्लम। मैं कहा ठीक है। अब जहां मैंने नहीं जाना था वहां मैंने अप्लाई कर दिया, एसएसबी की, सीएमबी की, या पीएफ अकेडमी रसालपुर पहुंच। पीएफ अकेडमी रसालपुर में घूमते घूमते फिर ख्याल आया, वो ज़ाहिर पहले से डिसाइडेड था, हमारे होते थे ओसी फ्लाइंग विंग थे, ओसी कैडेट्स विंग थे, विंग कमांडर रहीम यूसुफ ज़ई, आई थिंक ही रिटायर्ड लास्ट ईयर एज एयर मार्शल समथिंग, सो ही वाज देयर। सो मैं एक दिन साहब के ऑफिस गया, सलूट मारा, मैं सर आई वांटेड टू एंटर जीडीपी, एंड सो ये हुआ है, I would like to go to GDP. उन्होंने कहा ठीक है, वो मेरी देख रहे थे प्रोग्रेस एज ओसी जो देख भी रहा होता है, तो ही सेड नहीं तू ठीक है, तो मैं तेरा केस हेडक्वार्टर भेज देता हूँ, फाइन, आई एम पॉजिटिव इट विल बी डन। मैं कहा ठीक है। उन्होंने मेरा केस ओसी ने रिकमेंड किया और हेडक्वार्टर भेज दिया। इतने में हमारा जो बैच है एयरफोर्स का, उसका टाइम हो चुका था, पीएफ अकेडमी रसालपुर से फारिग होके हम आगे, हमने करंगी क्रीक रिपोर्ट करना था कराची। अभी तक एयर हेडक्वार्टर से कोई डिसीजन नहीं आया था। मैं साहब के पास गया, मैं कहा सर वो मेरा, वो कहते हैं आई थिंक कि हो जाएगा, तू ऐसे कर, यू डोंट गो टू कराची, यू नो, यू स्टे बैक, एंड मैं तुझे दूसरे कोर्स के साथ डाल देता हूँ, बट लेट यू बैच गो, राइट? और ठीक है। मैं 1 महीना ओवर स्टे किया रसालपुर में, मेरे ओसी ने मुझे रोक दिया। महीने बाद फिर ओसी ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि यार सॉरी, एयर हेडक्वार्टर हैज रिफ्यूज्ड, this is defeating their practice of taking people, you know, on metric basis, and so from now onwards it's not being done. I tried my best, sorry, but you have to go and join your course. So फिर I went and joined my course. अब मैं एक ऐसी जगह में पढ़ा हुआ था जहां पे मैं करना तो इनिशियली तो मैंने ये नहीं था, अब मैं उसमें कहीं से घूमता फिरता आ गया था। So I put up with it for about 3-4 years. It was nice, but it wasn't me, right? अच्छा। And I will never be comfortable unless it's me, right? So one fine day I decided, hey, I gotta go, right? And then I just left, and फिर मैं IBA चला गया। IBA was the first time in my life that I came into the civilian world. कुछ अजीब सी थी, इसमें लड़कियां भी होती थी इस दुनिया में। उससे पहले तो यू नो आई वाज लाइक, एक तो वो टिपिकल क्वेटा, फिर ग्रामर स्कूल, ऑल बॉयज स्कूल, फिर साइंस कॉलेज, ऑल बॉयज साइंस कॉलेज, देन पाकिस्तान एयरफोर्स, ऑल मेल, एंड नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कराची यूनिवर्सिटी, with civilians and women and that kind of a thing. So New species, yeah. Well, it was kind of funny, right? so a new experience for somebody like me. And then well, the first thing that I've always felt in all civilian life, even to date, कितने साल हो गए एयरफोर्स छोड़ दी या मिलिट्री की सर्विसेज छोड़ दी, वो camaraderie सिविलियंस में है ही नहीं। क्योंकि हमारा तो ये होता था ना, हम एक बैच है, हम एक ग्रुप है, हम ये मेरा बैच है 22 है, ठीक है। अब 22 ने बैठ के फैसला किया कि जी हमने फर्ज करें कल सुबह असेंबली में नहीं जाना, मौत आ जाएगी नहीं जाना, अब सीनियर का ऑर्डर है, बोले जिसका ऑर्डर है नहीं जाना जी, देखी जाएगी। तो फिर यू रेस्ट अश्योर्ड कि सुबह कोई नहीं जाएगा उधर, यू नो, देयर विल बी नोबडी देयर नेक्स्ट मॉर्निंग बिकॉज़ वी 22 ने एक फैसला कर लिया, राइट? या अगर एक बंदे ने, मेरे किसी कोर्समेट ने, बैचमेट ने कुछ किया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्क्वील ऑन हिम, आई एम नॉट गोइंग टू रैट आउट ऑन हिम कि जी ये फलाने ने कर दिया। तो वो तो मुझ पे जो भी गुजरेगी, बट वी आर गोइंग टू स्टैंड अप फॉर ईच अदर, राइट? नाउ at that tender age, when those concepts get into your mind, and when you come to a civilian life and you see that these people are continuously trying to कि जी फैसला एक किया, अच्छा जी हम ये नहीं करेंगे, अगले दिन सुबह देखेंगे सारे आधे जो है उधर बैठे हुए हैं, कोई किसी के पैर पड़े, नहीं जी अच्छा जी
So I found these people very strange. I still find them very strange. You know, they can't make up their minds, right? They're afraid. It's fear, right? So वो जो fearlessness है ना, और मैंने जो जिंदगी में डिस्कवर किया है, मेरे स्कूल्स में भी वो fear नहीं था, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने जिंदगी में जो चीज फील की कि you cannot be yourself if you're afraid. If you're afraid. मगर आशिर पहले ही आपने बताया ना कि जिस तरह फौज के अंदर तो don't they scare you कि जो है ना कि तुम्हें बस ये भी सुनना है, ये बात हमारी, and you can't think of your own. Isn't that fear? Is it fear? I think it's a very tunneled view of things. But देखें, अब एयरफोर्स में मैं आपको एक बात बताऊं, अब एयरफोर्स में मुझ पे ये फियर नहीं है. जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो फर्स्ट डे वी रिपोर्टेड टू पीएफ अकेडमी रसालपुर, so there was this gentleman called Flight Lieutenant Kazi, I think his name was. He was a flight lieutenant then. He was a squadron commander, or cadets wing से officer, mess generally cadets खुद manage करते हैं, officers का मान. तो उन्होंने आगे कहा कि this is Air Force, get your priorities right. My thing to you is you must have your priorities right. Shaji, क्या है? We are at an impressionable age. He said, and I distinctly remember his words, even his voice kind of, you know, he said, your first priority is your family. They will always be your family. Your second priority is Pakistan. Your third priority is Pakistan Air Force. Okay. Get this in order, और जब भी इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तुमने प्रायोरिटी के मुताबिक चूज करना है. ठीक है जी, एक बात. दूसरी बात उन्होंने कही, 3 other things. You will do whatever your senior tells you to do. But there are 3 exceptions to it. 1, he can't touch you. Just can't touch you. Okay. The moment he touches you, then he is no longer your senior. Then you do whatever it takes to defend yourself, right? You do it, right? Yeah. Not that you do not defend yourself and report later to us. You do whatever it's necessary to defend yourself, and then when it comes to us, we'll find out what really happened, right? So 1, they can't touch you. 2, they cannot say anything to you जो आपकी जात से आगे जाती है. मेरा सीनियर मुझे कुछ भी कह सकता है, खोता कह सकता है, मुझे खोते का पुत्र नहीं कह सकता. Okay. मेरी रिलीजन पे नहीं जा सकता, मेरी फैमिली पे नहीं जा सकता, मेरी किसी बिलीफ पे नहीं जा सकता, मेरी जात तक जो मर्जी कर, मैं उसका मुलाजिम हूं, मेरा बाप तेरा मुलाजिम नहीं, right? Third thing, they can't ask you to do anything indecent. Anything indecent. कपड़े उतारो, ये करो, कोई भी चीज जो आप समझते हैं कि indecent है, your senior can't ask you to do that. ठीक. बाकी आप, so when you say there is fear, there's no fear. There's dignity, there are rules. और मैंने जो एक चीज, मतलब आज भी मैं सोचता हूँ, so during training बहुत सारी हम phases से गुजरते हैं, और एक ये भी टाइम था कि हम गार्ड ड्यूटीज पे वो हमें ट्रेन कर रहे थे. तो यू नो रसालपुर में वो जो हमारे एयरफोर्स का बेस है या जहाँ पे रनवे है, इन द मिडल ऑफ द नाइट वो G3 हमने पकड़ी हुई है, और जेब में जो है वो 20 गोलियां सेपरेट हैं, वो लोडेड नहीं होती थी G3, लेकिन लाइव एमो हमें दिया होता था जो कि अलग जेब में पड़ा होता था. एंड आप रात को जंगल बियाबान में घोप अंधेरे में यू नो खड़े हैं, आपकी 4 घंटे की यहाँ गार्ड ड्यूटी है, ठंड भी लग रही है, जो भी हो रहा है, और उसमें ये होता था एक चेकवर्ड और एक पासवर्ड. आप एक पासवर्ड आएगा, अगर कोई बंदा आता है आप उस जगह पे, तो आप उसको हॉल्ट करोगे, बंदूक सीधी करोगे, और आप उसको कहोगे कि भाई पासवर्ड बता. अगर उसको पासवर्ड नहीं पता तो वो आगे नहीं आ सकता. वो बेस कमांडर भी हो, आप उसे पहचानते भी हो, उसको पासवर्ड पता होना चाहिए. Okay. You know, so if you don't know the password, I don't care if you're the air chief, right? Those are your orders, right? So you will shoot him. This is what the thought is, right? अब उस गोपन धैर्य में जब आप खड़े हो और कभी कभी वो चेक करने आते हैं ऑफिसर्स आपको, तो वो आपको पता चलता है कि ये तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट कैसर है, ठीक है जी, अपना बॉस है, मगर मैंने तो उसे हॉल्ट किया हुआ है और मेरी बंदूक उस पर सीधी है, और मैंने उससे पूछा है कि भाईजान पासवर्ड क्या है, और अगर इसको पासवर्ड नहीं पता तो ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट कैसर नहीं है. Now appreciate that difference. I am supposed to follow
orders, not authority. I know that who this guy is, Uh, but I'm to follow a system, not the face of this guy, right? So again, the same thing. So it's a complex thought, but you know, वेस्ट में जब आप एक ट्रैफिक साइन पे, स्टॉप साइन पे आके गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और कोई भी नहीं उसको देख रहा, वो थोड़ी देर खड़ी रहती है और उसके बाद चली जाती है, थोड़ी देर खड़ी रहती है, इसको कोई जजा और सजा के लिए नहीं है खड़ा होता। सही बात है। ये इसलिए खड़ा है because it's the right thing to do. It's following a protocol, a procedure that they've set up. This is a free man. Slaves will only work when there is force on them, when there is fear on them. They will respect only authority. Right? Now, जब आप ये कहते हैं ना कि जी मैंने बड़ी स्ट्रगल की और पाकिस्तान को फिक्स करने की, yes, I dearly love that country, still love it, right? It is my country. And starting from Dhua, I try to communicate with the people. In my professional life, मैंने आमिर दुरानी को पता है, बाकी लोगों को पता है, मैंने सिस्टम रिफॉर्म, लॉज रिफॉर्म, हर चीज चेंज, जो कुछ मैं कर सकता था उसके अगेंस्ट क्या कॉस्ट आई है, क्या दुश्मनियां बनती हैं, I don't care. I have never been afraid of making enemies, right? I'm going to do what I think is right. Whether उसमें फायदा है या नुकसान है, I'm not the type who thinks that way, because it's screw you, you know. Who you are. Ab ye surat, and then my movie, you know, it tells you, hey, you're the owner of this country and you have to take responsibility for it. But if you think I'm going to join slaves, right? Oh, forget about it, you know. Right. I'm going to stand with you. अगर आप मेरे बैच की तरह जो आपने फैसला लिया है उस पे खड़ा होने की आप में हिम्मत है,